Hey, what is up internet? Welcome back to the channel and जी हाँ, Noise ने एक और ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च कर दिए हैं. These are the Noise VS303 and they are launched at a price of ₹1799 here in India. And 2000 के नीचे अगर आप एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स देख रहे हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका पहला ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स होता है, राइट? सो इन दिस वीडियो let's find out if Noise VS303 can be your first pair of true wireless earphones. Let's find out. Now, right off the bat आप नोटिस करोगे कि इसमें हमें एक पेबल शेप्ड का चार्जिंग केस देखने को मिलता है एंड ऑल्दो इट्स नॉट द मोस्ट पॉकेटेबल चार्जिंग केस एवर, ये फिर भी आपके डेनिम्स की या ट्राउजर्स की पॉकेट्स में आराम से फिट आ जाएगा. नाउ इसमें हमें एक ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है एंड बिकॉज द केस इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक इसमें बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं. एंड फनीली इनफ आई डोंट नो व्हाई नॉइस ने अंदर की तरफ तो मैट फिनिश दिया है बट बाहर की तरफ ग्लॉसी फिनिश दिया है, which is interesting. But that aside, I like the hinge on this case and also how it clicks. मतलब इतना ज़्यादा cheap नहीं लगता, but जो magnets हैं जो earbuds को अंदर intact रखते हैं वो थोड़े से weak लगे मुझे, but again you can't expect everything at this price point. But एक और चीज़ जो मुझे इस charging case के बारे में लगी वो है USB Type-C for charging. And I'm not sure if this port supports any sort of fast charging, but in terms of battery life, Noise claim करता है कि आपको earbud से 6 hours of music playback मिलेगा. And then in total you can get about 24 hours of battery life. And during my testing I would say it lasted somewhere around 5 to 5.5 hours on the earbuds, and that itself I would say is amazing for a true wireless earphones at this price point. And because USB Type-C है, आप इस चार्जिंग केस को अपने फ़ोन के चार्जर या इवन आपके लैपटॉप के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो. Super convenient. Okay, once you have your earphones charged up, all you have to do is take them out of the case and they will automatically go to the pairing mode. And not only that, you can also use the dedicated pairing button on the case if you want to pair them to a new device. Now in terms of connectivity overall, इसमें Bluetooth 5.0 मिलता है, so nothing crazy, but honestly मुझे कोई ऐसे issues face नहीं हुए when pairing these to my phone or laptop or even in general when it comes to connectivity. Now एक चीज़ जो मुझे थोड़ा irritating लगा कभी कभार was that कि जब भी मैं इससे म्यूज़िक प्ले करता था sometimes क्या होता था कि पहले एक ही ईयरबड में आवाज़ आती थी and then it would take a good couple seconds to flow it to the other earbud as well, but ये इतना frequent नहीं था, so I would say it's not a big deal. And in terms of latency, unlike the VS103 जिसका रिव्यू मैंने इस चैनल पे अभी रिसेंटली किया था, इसमें कोई भी आपको लेटेंसी में इश्यूज नहीं मिलेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग यूट्यूब वीडियोस बोथ ऑन योर फोन और योर लैपटॉप. ऑल्दो अगर आप गेम करोगे तो आपको थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिल सकती है. ऑलराइट, यू हैव दिस कनेक्टेड टू योर फोन and you're all set to listen to some music, but before you do that, here is how they will look in your ears, and I would say they look pretty good for the price. Now इसमें भी of course आपको वो Apple AirPods like design देखने को मिलता है with that stem, but I would say that's not a bad thing at all. Now बाहर की तरफ आपको थोड़ी सी noise की branding भी देखने को मिलती है, which also doubles up as the area where you'll use your touch controls, but I'll come to that in a bit. Back to design. I love the fact कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड ऑल्सो आई लव द फैक्ट कि इसमें भी आपको सिलिकॉन ईयर टिप्स देखने को मिलती है, सो दे विल नॉट फॉल ऑफ इवन इफ यू आर यूजिंग दीज फॉर वर्कआउट और एनी अदर फिजिकल इंटेंसिव एक्टिविटी. एंड यू डू गेट 2 extra ear tips inside the box if the one that comes, I think it's the medium one, doesn't fit you well, but overall I would say design or comfort wise I think ये one of the strongest points है of Noise VS303. Okay. You like how these look in your ears? They're also connected to your phone. So let's play some music. In terms of sound, Noise VS303 में आपको 13 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, which I think is really impressive for the size they come in. पर जो उनका overall sound signature है वो मुझे ठीक ठाक लगा. Now again, if you don't care about sound that much, you would easily get away with these, but if you do, let me break down the sound for you. Now first of all, ये बहुत ज़्यादा loud हो जाते हैं and even though इसमें कोई active noise cancellation ऐसा कुछ नहीं है, आप फिर भी बाहर की दुनिया से completely disconnect हो सकते हो अगर आप इसको about 80% ऑफ वॉल्यूम में सुनते हो. एंड जो साउंड सिग्नेचर है वो मुझे ओवरऑल इसका फ्लैट लगा या थोड़ा हॉलो लगा, एंड आई से दैट बिकॉज जो उसमें बेस है वो काफ़ी मशी है एंड it lacks that punchiness and you don't get it even when you expect it. इसमें जो highs हैं
वो मुझे ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लगे, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड. बट जो मिड्स हैं दैट वर रियली गुड, एटलीस्ट रियली गुड फॉर द प्राइस. सो जो आइडियल यूज़ के सिनेरियो मैं सोच सकता हूँ फॉर द नॉइस VS303, दैट वुड बी अगर आप बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनते हो या अगर आप बहुत ज़्यादा ऑडियो बुक सुनते हो, दिस वुड बी आइडियल फॉर यू. ऑन द अदर हैंड, अगर आप बहुत ज़्यादा बेस हैवी म्यूजिक या म्यूजिक सुनते हो इन जनरल या मूवीज़ देखते हो, these will, I think again these are fine, but you have a lot of other options in the market because इसका जो साउंड स्टेज भी है वो भी मुझे काफ़ी ओके लगा. बट अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स लेते हो, दिस इज हाउ यू विल साउंड लाइक फ्रॉम द नॉइस VS303. नाउ अभी सिर्फ मेरा विंडो एसी ऑन है इन द बैकग्राउंड, सो ज़्यादा एम्बिएंट नॉइज नहीं है, बट स्टिल it does a decent job, although sometimes I feel it struggles to cut down the ambient noise when you're talking from this Noise VS303. But let me know in the comment section below, what do you think of the microphone quality. Okay, before I can jump to the verdict, इसमें जो टच कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं. एंड जस्ट लाइक एनी अदर ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, इन टच कंट्रोल से भी आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन गो टू द नेक्स्ट ट्रैक और प्रीवियस ट्रैक. यू कैन ट्रिगर योर वॉइस असिस्टेंट एंड यू कैन टेक एन कॉल्स. एक मिनट. हेलो. ओके, सो देर इज़ नो IP रेटिंग. सो इसमें आपको कोई भी वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को नहीं मिलता. ओके, लेट मी आंसर द क्वेश्चन. Should you get the Noise VS303 for a launch price of rupees 1799 rupees? By the way, Noise will increase the price of these to 2000 rupees after maybe 3-4 days. So let me rephrase the question. Should you get the Noise VS303 for a price of rupees 2000? Well, this is where the competition comes into the picture. अगर आप मुझसे एक साल पहले पूछते ना कि नॉइस VS303 2000 की प्राइस रेंज में कैसे ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं, मैं इनको आराम से रेकमेंड कर सकता. बट लास्ट एक साल में ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का सेगमेंट इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है कि अब 2000 के नीचे भी हमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं इन द नेम ऑफ साउंडकोर R100 एंड जस्ट लॉन्च ओप्पो एंको बड्स, जिसमें आपको फीचर्स लाइक IP54 एंड ऑल्सो ऑटोमेटिक वियर डिटेक्शन भी देखने को मिलता है. सो इफ़ यू वांट दोज ऑप्शन, consider those. Otherwise, I would say Noise VS303 is still a decent buy under rupees 2000. This was my quick review of these wireless earphones. Let me know in the comment section below आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है, you can subscribe to TQnet and specially hit that bell icon so that you get notified जब भी मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा. And yes guys, till then keep asking and I will see you in the next one.